A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक हैं. And along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of the session. क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आज के ही तमाम फैक्ट्स पे आधारित हैं, तो आप इनके आंसर्स देने का प्रयास कीजिएगा और इनके आंसर्स आप निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 13 अगस्त अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की. The very first fact here is associated with 1784 when the Pitt's India Act came into force अर्थात आज के दिन पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था. The Pitt's India Act 1784, which was also called as East India Company Act 1784, को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था to correct the defects of the previous act called Regulating Act of 1773. This act resulted in dual control of British possessions in India, एक by the British government और दूसरा by the company, with the final authority being in the hands of the government. इस एक्ट का नाम रखा गया था विलियम पिट द यंगर के नाम पे, who was Britain's prime minister when this act was rolled out. The act made a distinction between commercial and political activities of the East India Company. इसके कारणवश कंपनी became a subordinate to the British government, जो कि पहली एक्ट अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत नहीं था, क्योंकि तब the government only sought to regulate matters and not to take control over them. परंतु Pitt's India Act established the British Crown's authority in civil and military administration of its Indian territories. Commercial activities अभी भी कंपनी की ही मोनोपोली के अंतर्गत आती थी. In this dual system of control, the company was represented by the court of directors, परंतु ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट किया जाता था by the board of control. The Governor General's council strength was also reduced to 3 members, or one of these 3 would be the commander-in-chief of the British Crown's army in India. इसके साथ गवर्नर जनरल को दिया गया the right of veto also. और अब इसके साथ आइए देखते हैं which is the next fact of today. This is associated with 1848 when economic historian रोमेश चंद्र दत्त was born. अर्थात आज के दिन जाने माने आर्थिक इतिहासकार रोमेश चंद्र दत्त का जन्म हुआ था. उनका संबंध था बंगाल प्रेसिडेंसी से और वह एक भारतीय सिविल सेवक, आर्थिक इतिहासकार, लेखक और रामायण और महाभारत के अनुवादक थे. He along with Bihari Lal Gupta and Surendranath Banerjee had left for London in 1868. He qualified for the Indian Civil Service in the open examination of 1869, attaining the 3rd rank. He entered the Indian Civil Service as an assistant magistrate of Alipur in 1871. इसके साथ वह ऐसे पहले भारतीय बने who attained the rank of a divisional commissioner. वर्ष 1907 में वह रॉयल कमीशन ऑन इंडियन डिसेंट्रलाइजेशन के सदस्य भी नियुक्त करे गए थे. He retired from the Indian Civil Service in 1879 और 1898 में वह इंग्लैंड वापस लौट गए to become a lecturer in the Indian History Department at the University College of London, जहां उन्होंने अपनी फेमस थीसिस कंप्लीट करी थी on economic nationalism. He was also the president of the Indian National Congress in 1899 और वह बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी एक मेंबर थे. He served as the first president of Bangiya Sahitya Parishad in
1894, एक ऐसे समय में जब रविंद्रनाथ टैगोर और नवीन चंद्र सेन उसके वाइस प्रेसिडेंट्स थे। अगर बात करी जाए इनके द्वारा लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की, सो दीज आर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, socio-economic factors, and the peasantry of Bengal. And now let's have a look at the next fact, which is associated with 1936 अर्थात वर्ष 1936 से, when बीकाजी रुस्तम कामा had passed away, अर्थात आज के दिन भीकाजी रुस्तम कामा का निधन हो गया था। भीकाजी रुस्तम कामा was also called मैडम कामा। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। She played a very important role in India's freedom struggle and supported the cause of freedom through different means, even outside of India. इसी कारण से इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। In 1896, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक खतरनाक फेमीन आया था and the region was also hit by an episode of dangerous bubonic plague disease, she completely plunged herself into social work and started providing care and relief to those affected. In London, she came in touch with several Indian independence activists like Shyamaji Krishna Varma, Dada Bhai Naroji, and Singh Reva Bhai Rana. She started working there as Dada Bhai Naroji's private secretary. In Paris, along with Rana and Munshir Shah Burjorji Godrej, she co-founded the Paris Indian Society. इस संगठन की स्थापना करी गई थी 1905 में। When the Socialist Congress was taking place at Stuttgart in Germany, she appealed for equality, human rights and freedom from British. और इसी के साथ she also unfurled the flag of Indian independence. इसके साथ वह बनी थी पहली भारतीय to have hoisted Indian flag on a foreign soil. This flag, which was a modification of the Calcutta flag, was designed by Madam Kama and Shyamji Krishna Varma. ये उन सभी मॉडल्स में से एक बना, out of which the present or the contemporary Indian national flag has been designed. And talking about Paris Indian Society, this organization was opened as a branch of the Indian Home Rule Society, founded that very same year in London under the patronage of Shyamji Krishna Varma. Madam Kama was also a spokesperson for gender equality and women's rights. In 1997, the Indian Coast Guard commissioned a vessel जिसका नाम इनके ऑनर में रखा गया as ICGS भीकाजी कामा। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट फैक्ट, जो है हाउ टुडे द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, अर्थात आज के दिन विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है हर साल। This day is celebrated to raise awareness about the importance of organ donation and to motivate people to donate organs after death. Organ donation is the process of retrieving a donor's organ, such as heart, liver, kidney, intestine, lungs, or pancreas, and many others, after the donor has died, and then transplanting this organ into another person's body who is in a need of a new organ. Organ donation in India is regulated by the Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994. ये लॉ दोनों ही डिजीज्ड एज वेल एज लिविंग डोनर्स को permission देता है to donate their organs, and it also keeps one strict criteria for identifying a potential deceased donor, and this criteria is brain death. Only then is it permitted to retrieve a dead person's organ for usage by another person. अगर बात करें नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO की, तो ये फंक्शन करता है एज द एपेक्स बॉडी फॉर एक्टिविटीज related to procurement, allotment and distribution of organs across the country. और अब इसके साथ चलिए देखते हैं which questions do we need to solve today. The very first question is, when was the PITS India Act enacted? अर्थात PITS India Act कब बनाया गया था?
ऑप्शंस हैं ए 1780, बी 1783, सी 1784 और इज इट डी 1786। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थात द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस हैं ए परसिवियर स्पीयर, बी आर सी दत्त, सी बिपिन चंद्र और इज इट डी दादा भाई नौरोजी। तीसरा प्रश्न है, हु वाज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, अर्थात भारतीय क्रांति की जननी के रूप में हम किसका नाम याद करते आए हैं। ऑप्शंस है ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी मैडम कामा, डी प्रीतिलता वादेदार। With this, the fourth question is, who had founded the Paris Indian Society? अर्थात 1905 की पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। ऑप्शंस हैं ए लाला हरदयाल, बी मैडम कामा, सी लोकमान्य तिलक और इज इट डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। With this, the fifth question says, who had served as the first president of बांगिया साहित्य परिषद, अर्थात बांगिया साहित्य परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला था। ऑप्शंस में कुछ नाम हैं, विच आर ए दादा भाई नौरोजी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी आर सी दत्त और इज इट डी सत्येंद्रनाथ टैगोर। एंड नाउ द फाइनल एंड सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, व्हेन इज द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात किस दिनांक को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है हर साल। ऑप्शंस है ए 11 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 13 अगस्त या फिर इसका उत्तर होगा डी 14 अगस्त। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देते रहिए हमें। Now have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.